Hi dear students. Let's see this question that came in JEE Advanced Paper 2 Physics in the year 2019. One of the most controversial questions of 2019. This question made a lot of noise. But sadly, to my opinion, IIT stuck to their stance and they did not change the answer. So let's see what's happening over here. An optical bench, basically this question is from errors. An optical bench, which is 1.5 meters long, um, has a 4 equal division in each centimeter. So the least count of this instrument or the bench is 1 by 4 centimeter. Okay. So we are trying to measure the percentage error in the focal length of a lens. So let's see what we are doing. The lens is kept at a 75 centimeters mark. Okay. Object is kept at 45 centimeters mark and the image is formed at 135 centimeters mark, right? So using this data, we have to compute the percentage error in the focal length. So let us first see what IIT has assumed to be true and how are we going to get the answer as given by IIT. Okay. So we start with writing the lens equation 1 by v minus 1 by u is equals to 1 by f. Since u is negative, so I'll be putting u as negative over here. So I'm putting minus sign and now I will be putting u as positive. Differentiating this, we will get dv by v square plus du by u square is equals to df upon f square, right? Also, if you put the value of v as 60, because you can see v is 60 from here, u as 30, so this will give you f as 20. Okay. Now, let's see the errors in the calculation of errors in the calculation of u and v. So how are you going to measure u? So this is lens and this is object. So if you take the reading over here, so it is 75. There can be an error of least count over here. So we will say 75 plus minus least count, which is 0.25 centimeters. Similarly, the reading at object position will be 45 plus minus least count. So when you take the difference of these two readings, you will get 30 plus minus 2 least count. And hence we can say that the error in the measurement of u will be twice the least count, which is 0.5, right? So 0.5 upon u square, so u is 30 square. Similarly, the same logic, the error in the measurement of v will be 0.5, twice the least count. That will be 60 square is equals to df upon f square. So I'm putting 1f as it is and 1f I am putting the value. Because we have to find the percentage error, so I'm keeping it as df by f. Now you can do the calculations from here. It is very easy calculations. So you're going to get df by f as 1.39 approximately. It's approximately 1.3888 something, which when rounded off, it becomes 1.39. So IIT answer was 1.35 to 1.45. This is what IIT had given as the answer. So you can see this value is somewhere in between. So this is what IIT had taken to be true. Now, in my opinion, or what I believe is right way to do this question is that we should take the error here as least count only, not twice the least count as we have done here. So I will give you my reasoning. Why am I? Why do I believe or why do I think that least count should be taken as the correct value of the errors over here rather than twice the least count? But let's just assume it to be true. So in that case, you can see I would have written this as 0.25 and 0.25 because if I'm taking the value of the error as least count in the measurement of v as well as u, so it will become 0.25 and 0.25. So final answer will again be half of this, right? You can see very easily because I'm taking as 0.25, 0.25. So my answer is actually half of IT answer. So it will be 1.39 by 2. Actually, it is 1.388 by 2. So it will be approximately, this is what we get. So this we can say approximately 0.69. So in my opinion, the correct answer should be 0.69 is what I believe is correct answer in my opinion. Okay, now let me tell you why do I feel this is correct. Okay, so that I have drawn a scale. Let's see, let's suppose an object is there which I have kept like this. Okay, इस object को मैंने ऐसे रखा है. Now
ये रीडिंग 4 के बहुत पास है और ये रीडिंग 1 के बहुत पास है। यू कैन ऑल्सो आर्ग्यू कि ये 1 से कोइंसाइड कर रही है, ये 4 से कोइंसाइड कर रही है, बट दैट इज नॉट द करेक्ट आर्ग्यूमेंट, बिकॉज डेफिनेटली इन दोनों के डिफरेंस में माइक्रोमीटर्स, मिलीमीटर्स और नैनोमीटर्स का फर्क तो हो ही सकता है। वी आर अज्यूमिंग दैट ये एक स्केल है जिसका जिसमें मार्किंग्स हैं 0 1 2 3 4 ऐसे करके, सो यू कैन से दैट यूनिट्स वॉट एवर दिस इज, सेंटीमीटर्स, मिलीमीटर्स, वॉट एवर। तो ये यूनिट है, मतलब 0 से 1 यूनिट, 1 से 2 यूनिट, 2 से 3 यूनिट। सो इस स्केल का जो लीस्ट काउंट है दैट इज 1 यूनिट। सो व्हाट आई एम सेइंग इज कि इन दोनों के डिफरेंस में, मतलब इन दोनों वैल्यू, ये जरूरी नहीं कि कोइंसाइड कर रही हूँ, बट वी आर वेरी श्योर दैट ये दोनों मार्किंग्स बहुत पास है। So if I have to write this reading, okay, the correct way in my opinion is to write this as, suppose this is x2 and this is x1. So the correct way in my opinion is to write x2 as 4 plus minus 0.5 units, not 1. Because although this is very close to 4, but we are very sure, yeah, almost sure, yeah, certain, not almost sure, in fact certain, that this x2 is in this range. 4.5 से 3.5 के बीच में definitely ये lie कर रहा है, definitely. सिमिलरली x1 की वैल्यू की अगर बात करें, तो x1 भी सिमिलरली x प्लस माइनस 0.5, डेफिनेटली x1 1 प्लस माइनस 0.5 के बीच में ही लाई कर रहा है, मतलब 0.5 से लेकर 1.5 के बीच में ही ये लाई कर रहा है डेफिनेटली। अब ये 1 पे कोइंसाइड कर रहा है या नहीं कर रहा है, वी आर नॉट क्लेमिंग दैट, बट वी आर सेइंग कि x1 की वैल्यू इन दोनों के बीच में ही लाई कर रही है। नाउ इफ यू टेक द डिफरेंस, x2 minus x1 की वैल्यू क्या आ रही है, 4 minus 1 3, and these two are independent errors in the measurement of readings x1 and x2. So when they will be added, they will become 1. They will be added. That means जब इनको अपन रीडिंग का डिफरेंस लेंगे तो errors will be added. So this will become 1. And hence you see, जब हमने डिफरेंस लिया तो ये जो एरर आया ये एक्चुअली लीस्ट काउंट के बराबर मिल रहा है, नॉट ट्वाइस द लीस्ट काउंट। सो व्हाई इज इट बिकमिंग लाइक दैट, बिकॉज एज आई सेड, यहाँ पे जो रीडिंग ली जा रही है, तो व्हेन वी आर कोटिंग आवर रीडिंग, जब इस रीडिंग को लिख रहे हैं, तो द करेक्ट वे इज टू नॉट राइट दिस एज 4 प्लस माइनस 1, बट टू राइट इट एज 4 प्लस माइनस 0.5। ठीक है, बिकॉज ये वैल्यू डेफिनेटली इसके बीच में ही लाई करने वाला है, डेफिनेटली, फॉर श्योर। ठीक है, तो इन माई ओपिनियन दिस इज द करेक्ट वे। नाउ व्हेन द मोमेंट आई से दिस, देयर विल बी अ डाउट इन मेनी स्टूडेंट्स माइंड। सपो तो हमने जैसे अपन आईआईटी के प्रिपरेशन के समय ऐसे क्वेश्चंस बहुत करते हैं कि सपोज एन ऑब्जेक्ट वाज मेजर्ड, जैसे फॉर एग्जांपल मैं क्वेश्चन दूं, एन ऑब्जेक्ट वाज मेजर्ड यूजिंग अ मीटर स्केल ऑफ लीस्ट काउंट, लेट अस से 1 mm, एंड इट्स लेंथ वाज 5 mm। ठीक है, तो हाउ विल यू, व्हाट विल बी द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ द लेंथ। ठीक है, फिर से क्वेश्चन क्या है, एन ऑब्जेक्ट वाज मेजर्ड, ठीक है, यूजिंग अ मीटर स्केल of least count 1 mm, ठीक है, and length was found 5 mm। तो what will be the length, how will we write the length? तो अगर जो अभी हमने लॉजिक पढ़ा उस लॉजिक को यूज करें अगर हम, तो बहुत बच्चे बोलेंगे आंसर आएगा फिर तो 5 प्लस माइनस 0.5। ठीक है, क्योंकि अपन कह रहे हैं कि जो रीडिंग में, मतलब जो रीडिंग में एरर आता है वो लीस्ट काउंट बाय 2 होता है। दिस इज व्हाट वी आर सेइंग कि अपन एक किसी चीज को रीड कर रहे हैं तो उसमें एरर मीटर स्केल को यूज करके कर रहे हैं, अगर किसी रीडिंग को मीटर स्केल को यूज करके लिया जा रहा है तो उसमें एरर लीस्ट काउंट बाय 2 होती है। ठीक है, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। No, this is not right. This will not be 0.5. Actually, it will be plus 5 plus minus 1 only. ठीक है, अब ऐसा क्यों है? Are we saying two different things? No, we are not saying two different things. Let us see what I am trying to tell you. When you are measuring something, suppose ये 0 mm है, ये 1 mm है, ये 2 mm है, ऐसे करके, ठीक है। Now, how will you measure this 5 mm? So you will put this object, suppose this is that object. तो you will try to see, you will say कि ये 0 से coincide कर रहा है और ये 5 से coincide कर रहा है, ठीक है। एंड यू विल से कि भाई ये से 5 से कोइंसाइड कर रहा है, तो इसकी रीडिंग लेंगे तो ये 5 के पास आ रही है, उसकी रीडिंग लेंगे 0 के पास आ रही है। ठीक है, तो 5 मतलब इसकी रीडिंग अपन बोल देंगे, ठीक है। बट इफ यू थिंक केयरफुली, तो मतलब यहाँ पे भी 0.5 का एरर आएगा। ठीक है, मतलब इसकी रीडिंग अपन कैसे लेंगे, तो x2 की वैल्यू आएगी, जो अभी हमने लॉजिक पढ़ा उस लॉजिक के अकॉर्डिंग x2 की वैल्यू आएगी 5 प्लस माइनस 0.5 mm। ठीक है, एंड सिमिलरली x1, ये x1 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0 प्लस माइनस 0.5 mm।
दैट मीन्स ये जो x1 है ये 0 से कोइंसाइड कर रहा है, इसकी क्या श्योरिटी है? इसकी भी तो कोई श्योरिटी नहीं है। एंड हेंस ये 0 पे इसमें भी 0.5 यूनिट्स का एरर आ सकता है, भाई ये आगे भी हो सकता है, 0 के पीछे भी हो सकता है। तो व्हेन यू टेक द डिफरेंस x2 minus x1, अगेन यू आर गोइंग टू गेट 5 plus minus 1 mm। तो जब हम क्वेश्चन कर रहे होते हैं तो हम जो ये 1 mm लेते हैं लीस्ट काउंट की वैल्यू, अपन बोलते हैं ना कि एरर लीस्ट काउंट के इक्वल हो जाता है। तो बेसिकली उस केस में अपन इस बात को भूल जाते हैं, अपन इग्नोर कर दे रहे हैं कि एक्चुअली ये जो 1 mm का लीस्ट काउंट का एरर आ रहा है वो इस मेजरमेंट और इस मेजरमेंट में दोनों लीस्ट काउंट बाई 2 के एरर्स का सम है डायरेक्टली। ये फैक्ट बेसिकली अपन शायद पढ़ते नहीं है, पढ़ाया नहीं जाता है। तो जब अपन पढ़ रहे होते हैं तो बहुत बार दिमाग में ऐसी पिक्चर बन जाती है या ऐसा थॉट आ जाता है या ऐसा अपन सोचने लग जाते हैं कि जो एरर है वो सिर्फ इसमें ही था, ये फिक्स्ड वैल्यू थी, मतलब ये जीरो पे एकदम परफेक्ट कोइंसाइड किया था और ये इसमें ही एरर आया था और ये एरर लीस्ट काउंट के इक्वल था। बट रियलिटी में यहाँ पे भी लीस्ट काउंट बाय 2 का एरर है और यहाँ पे भी लीस्ट काउंट बाय 2 का एरर है, और जब हम डिफरेंस ले रहे हैं इस रीडिंग का तो अगेन दैट इज बिकमिंग इक्वल टू लीस्ट काउंट। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड ओवर हियर इन माय ओपिनियन, and hence IT should have taken only least count as the correct value. So ये मेरा मानना है, and hence I feel कि answer should have been 0.69 and not 1.39 as IT had said. That's what I believe. Thank you.